from here onwards, every single goal counts. For the matchup that we have right now, this is going to absolutely just blow over the rooftops right over your head. Welcome, ladies and gentlemen. You are watching the eISL Season 2, brought to you by Nordwind Gaming, where we head into a very important clash to decide who is going to make it to the playoffs. Now, we've got on one side ATK Mohun Bagan. On the other, we have Kerala Blasters FC. Now, this is where, for Kerala Blasters FC, it's a must-win game. And same goes for ATKMB. Whoever wins this one will still keep their dreams alive of making it to the playoffs. Uh, it's done and dusted, pretty much. At least for Kerala Blasters FC, it's over, right? Because ATK Mohun Bagan might still be in the contention, but then maybe that goal difference could come into play. So nothing can be certain for right now, but let's just keep it in mind. It's a must-win matchup for both of them. Joined along, I'm Fixes with TT. So TT, ATKMB and Kerala Blasters FC, what are your speculations? आई थिंक अभी तक जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है दोनों ही क्लब्स का, स्पेशली ये मद्देनजर रखते हुए कि लुकमान्यू अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं एंड पिछला गेम बहुत शानदार था. आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये दोनों के लिए 50-50 होने वाला है. और कौन किसके खिलाफ जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ पता चलता हुआ दिखेगा. ओके, सो विकी के खिलाफ लुकमान्यू जा रहे हैं और अफनान के खिलाफ जा रहे हैं शुभम. तो कहने की लुकमान्यू के साथ शुरुआत किया जाएगा. विकी भी थोड़ा स्लो खेलना पसंद करते हैं, लुकमान्यू भी थोड़ा स्लो खेलना पसंद करते हैं. तो बहुत शानदार होगा एंड आखिर में दोनों ही क्लब्स के स्टार बॉयज एक दूसरे के खिलाफ जाने वाले हैं. तो या आई थिंक मेरे लिए तो ये 50-50 है. मे बी एक ड्रॉ हो जाए, बट ये ड्रॉ शायद दोनों ही क्लब्स नहीं जाएंगे. Yeah, I mean, both of them would want a three-pointer here. Draw is at least not going to help Kerala Blasters FC. Nonetheless, could help potentially ATKMB, but for Kerala Blasters FC, it will be done and dusted then and there only. And we've got so many interesting matches lined up because considering that all these middle order teams right now are facing up against each other. Kerala Blasters FC fighting for life and death over here. They have a matchup right now with ATKMB. If they win, then it still can't be said for certain that they're qualifying, because then they will have to win the next match against Chennai FC, where Chennai FC are still in the race also. If they win that match against Kerala Blasters FC, then they qualify and Kerala Blasters FC get remain behind. So now this is all coming down to just that one result from a game where Jamshedpur FC had nothing to lose. They go out and cause one of the biggest upsets, which is opened up that 5th and 6th spot, and it's so much drama that's happening. Now, addressing that first game that we have, Vicky, he's in form right now, and Kerala Blasters FC have gone to their old ways of Lokmanu starting the games. So now, considering that Vicky has been one of the consistent players, you can say, if not too great, hasn't been too bad either, right? He has been having those good days, having those bad days. He has scored some big goals, some 5-6 goals also. If you remember, I think it was against Vakya. And there have also been days where he has been beaten down. But he's one of those players who can hold on to his own. Quite an older player in the community who goes up against one of the veterans, Lokmanu, who has recently gotten back his old form. We could see that charisma out from Lokmanu. But I still won't say he's at his best, right? Lokmanu can still do a lot more better. And considering both these both these clubs are going to be playing under extreme pressure, TT, who do you think? पलड़ा किसका भारी है? आई थिंक आज पल्ला भारी किसका है वो समझना भी मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि इधर दोनों ही क्लब्स ऐसे सिचुएशन में बैठे हैं. प्रेशर तो दोनों के ऊपर रहेगा. पिछली बारी फिर भी हम लोग कह सकते थे कि जमशेदपुर एफसी के ऊपर प्रेशर नहीं है तो वो खेल लेंगे, बट आज इस जगह पे दोनों के ऊपर प्रेशर है. स्पेशली विकी एंड लुकमान्यू, दोनों में से कौन निकाल लेके जाते हैं उस गेम को, वो तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा ही करेगा. और उसके साथ आज शुभम एंड लुकमान्यू का जो गेम है कोऑप के ऊपर, वो कैसे जाता है, वो ये दोनों गेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आखिरी गेम में तो कुछ भी हो सकता है. आखिरी गेम पे जाके, क्योंकि अफनान भी बहुत शानदार फॉर्म में है, ऑन द अदर हैंड शुभम हम लोग को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए देखते हैं.
तो कहीं न कहीं यस, कोई भी तरफ जा सकता है, उस पे तो कोई प्रेडिक्शन कि हम लोग पी पे भी नहीं जा सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बट जो पहला 2 गेम है, आई थिंक मुझे लगता है कि लोकमान्य जिस तरीके से पिछला गेम खेला था, तो लोकमान्य की तरफ जा सकता है। बट जो सेकंड गेम है को-ऑप, वो शायद इधर एटीके मोहन बगान के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा जाए मेरे हिसाब से। बट ये सब कुछ तो गेम के ऊपर आज क्या मेंटालिटी लेके उतरेंगे, आज उस टाइम पे कितना फोकस कर पाएँगे और कौन प्रेशर में भी परफॉर्म कर पाएँगे, वो सब कुछ डिसाइड करेगा कि आज के गेम का रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि इस प्रेशर को जो झेल पाएँगे, वही आगे जा पाएँगे। Yeah, and that will still not ascertain a place in the playoffs unless and until you win the next match also. So a must-win game, I must say, for both these clubs, where ATKMB can still, at the very worst, at the very least, can afford a draw. Because if they get a single point from here, then they move on to 10 points, I believe. Yes, they move on to 10 points. And then if they win their next matchup against Hyderabad FC, then they head on to 13 and they might qualify. But yes, now the match has pretty much begun. As you can see, we'll have to wait and watch what's going on in each other's head. So both these clubs going for a 4-3-2-1 formation with Lokmanu quite default with that ultra defensive, and you've got Vicky with attacking style of play. So it's going to be interesting because Lokmanu is one of those players who's extremely patient, who builds up his play, goes for those quick passing, and kind of forces the opponent into thinking when he's going to take a shot. And those quick passes sort of make it very difficult when you are manually controlling those players, those L1 switches, and little time here and there, and even comes down to how good your internet is at this point. Because if it's even a microsecond late, then somebody else will capitalize, and both the players have the caliber. Vicky and Lokmanu going head to head. Matches begun. Kerala Blasters FC from left to right, and ATK Mohun Bagan from right to left. And right off the bat, you could see Lokmanu with Hakimi. And I think we're going to see some real nice battles going on in the midfield, right? Both these players have to be hungry. So far, we haven't seen Vicky trying to contest a lot for the ball as Lokmanu instantly capitalizes, gets in Capdevia, still holds on to the ball, a little bit of a ball roll, goes for a cutback, but Van der Sar, he was unable to save that, but Virgil van Dijk steals it away. Vicky survives the first attack. फाइनली विकी उनको थोड़ा-सा देख के खेलने की ज़रूरत है क्योंकि ये लोकमान्य शायद वो लोकमान्य नहीं है जो कि हम लोगों को पूरे थ्रू आउट द इवेंट शुरुआती स्टेज पे देखने के लिए मिले थे। पिछले कुछ दिनों से वो मैचेस जीते हैं। पिछला गेम इवन उन्होंने जीता है और कहीं न कहीं उधर से उनको कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा मिल रहा होगा। इस बार विथ रोनाल्डिनियो कोशिश था कि वो उनको एक गैप मिले और इस बार जॉर्जिनियो के साथ मिल भी गया था बट वर्जिल वैन डाइक को पीछे से लेके आए जिसकी वजह से बॉल छीनने में अभी के लिए तो सफल हुए हैं विकी। लेकिन ये शुरुआती 10 मिनट की अगर बात किया जाए लोकमान्य बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, हाई प्रेसिंग करते हुए दिखे, जिसकी वजह से मुश्किलें क्रिएट हुआ विकी के लिए। बट क्या ये काउंटर विकी के लिए गोल लेके आ सकता है? मौका था बट एक गलत पास, हकीमी बॉल छीनेंगे और ये उन कुछ मैचेस में से है जिस पे आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और आपके बैक ऑफ द माइंड वो गेम खेलते टाइम एटलीस्ट ये नहीं चलना चाहिए कि अगर ये गेम जीत गया वो क्या होगा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आ गया देन वो शायद आउट ऑफ फोकस हो सकते हैं। तो अभी इस गेम के ऊपर फोकस करके खेलना चाहेंगे और वही शायद कर रहे हैं। रोनाल्डो कोशिश था इधर अकेले इंडिविजुअली बेलिंगम को बीट करने की बट वो हो नहीं पाया। Yeah, I mean, the Yellow Army, they have to do the impossible, the inevitable, have to somehow win this match, and Lokmanu has to be the one who gets that first W. Nice chain of passes with Ruud Gullit, goes for a heel-to-heel, but still manages to return onto the ball. He had already prepared Jorginho for a shot, but sadly, the ball was left behind, and well, now Vicky gets a chance on attack. Now, Vicky is one of those players, you can never really rule him out. He's one of those players who can win games, and he has done that in the past for ATKMB. ATKMB this season in the eISL for them has been really brilliant. I felt like Messi was hindered by his own teammate Ronaldinho there.
You know, he was trying to pace in. He could have certainly gone in and he would have taken a shot which could have become an easy goal. But still, Vicky managed to retrieve possession back with Ruud Gullit searching for passing options. Finds Jude Bellingham. And from here onwards, where does he go? Very patient with his build-up. Goes on for that recycling with a heel-to-heel. Trying to break through Virgil van Dijk, but Ronaldinho being very stubborn, not letting go of the ball. खतरा अभी भी टला नहीं है, बट फाइनली एक गलत पास और जिसकी वजह से बॉल अभी निकल जाएगा। विकी ये बीच के 17 मिनट पूरा डोमिनेट करते हुए दिखे। सो गेम ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा चला। कुछ टाइम पीरियड के ऊपर दोनों में से एक क्लब जो है वो इधर चढ़ के खेल रहे हैं और बॉल पोजीशनिंग काफ़ी अच्छा है। जब केरला ब्लास्टर्स को मिल रहे हैं वो अपने पोजीशनिंग को मेंटेन कर रहे हैं, वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि वो गलत पासेस ना खेले और जो शॉट वो लेना चाह रहे हैं वो फाइनली 100% एक सोच के साथ जाना चाह रहे हैं ताकि ये गोल आए। सेम चीज़ दोनों ही क्लब से, बट इस बार एक गलत पास जिसकी वजह से बॉल कंट्रोल गया ATKMB के पास एंड वो अभी स्लोली स्टेडीली धीरे-धीरे करके प्लेयर्स इधर इंक्रीज करेंगे अटैक पे। मिडफील्ड पे इधर मेसी को खिलाया जा रहा है, बट गुलीत के फिजिक के सामने मेसी ज़्यादा देर तक इधर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए बेलिंगम बहुत अच्छे से बॉल छीना। तो अभी मिडफील्ड गेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों को ही हम जानते हैं थोड़ा बिल्डअप के ऊपर ज़्यादा खेलते हैं, थोड़ा स्लो खेलते हैं गेम, ज़्यादा हाई फास्ट पेस खेलना नहीं चाहते। थ्रू बॉल्स भी बहुत ही कम देखने के लिए मिला है इन दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो दोनों का प्ले स्टाइल बहुत सिमिलर है। तो मिडफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनका मिडफील्ड पे कंट्रोल ज़्यादा रहेगा उनका अटैक भी ज़्यादा होगा एंड वो शायद प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट करेंगे ओपोनेंट क्लब को। Yeah, and at this point, you could see both the players are playing so safe, TT. Nobody is going for those risky plays as of now. But some point or the other, somebody has to draw first blood, right? Somebody has to create a pass, take that risk, you know, expose himself, and then score a goal. Now look, Manu, that's a nice pass on towards Kylian Mbappe. Instantly took that shot. Wasn't green time, but does not matter from that position. But the way he had to take a turn, that sort of changed it. And had R9 been there in that position, I could have certainly said that could have been a goal. We have seen on various occasions that has been the case now. All right, Hakimi has been beaten, and now a clean shot on goal. Oh, that's beautiful. But no, look, Manu still somehow managing. And Vicky must be kicking himself in the feet over there, but no way. Both these players just exchanging blows against each other. And you can clearly see that even after that first half, the deadlock hasn't been broken. Neither of them have been able to score. Both of them have been creating chances nonetheless. And you know, in these matches, in these nail-biting affairs, it could just be anybody's. It all has to come down to even luck at a certain point, and even to the fact that who makes the least mistakes. Nothing separating these two. Look at the possession, 50-50. That goes on to show how hungry and at the same time how alert and alarmed these two players are. बिल्कुल, एंड देखिए इधर ये कहने के हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि दोनों ही कुछ इसी तरीके से खेलेंगे, सेफ खेलेंगे, क्योंकि उनके गेम पे ये दिखता है, ये झलकता है और ये इनके लिए कभी कभार बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, कभी कभार यही चीज़ उनके लिए डिसएडवांटेज भी क्रिएट किया है। लेकिन आज जब दोनों ही सेम प्ले स्टाइल के प्लेयर सामने सामने आएंगे तो कुछ इसी तरीके का जो आउटकम है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि इधर ATK मोहन बगान की तरफ से एक भी शॉट ऑन टारगेट देखने के लिए नहीं मिला, बट हालांकि एक शॉट लिया जरूर गया था। ऑन द अदर हैंड केरला ब्लास्टर्स से एकदम स्टार्टिंग पे जो एक शॉट ऑन टारगेट देखने के लिए मिला था एंड उन्होंने उसके बाद एक शॉट ऑन टारगेट और लिया। सो दो शॉट्स इधर टारगेट पे रहे। अभी तक अगर देखा जाए कोई भी किसी के ऊपर उतना ज़्यादा चढ़ नहीं गए थे, बट आई थिंक जो ये हाफ है, इस हाफ पे मे भी आखिर के 20-30 मिनट पे हम लोगों को देखने के लिए मिले कि यार धीरे धीरे करके गेम खुलता हुआ, लेकिन उसके पहले मुझे लग नहीं रहा। अभी भी शायद 10-15 मिनट तक तो मुझे लग रहा है ऐसा थोड़ा स्लो गेम ही चलेगा और कोशिश करेंगे सेफ खेलने की। I mean,
That's what both these players will have their intentions. Both of them eyeing for that first goal to be scored. And Lokman, you cannot be loose on that defense. Finally, makes a firm tackle there, gets the ball away. Now he's got to build up his play. He's got to be extreme cautious. And same goes for Vicky. Cannot let Lokmanu look threatening, right? Because Lokmanu has been one of those players in this match that has been actually taking shots on goal. And one very close one with Kylian Mbappe could have easily been scored. But right now, Lokmanu is just pacing in from that left hand side. And that cutback coming in. And R9 surely does not miss from that position. And just like that, the Yellow Army, they have taken the lead. And ATK Mohun Bagan completely gutted. For a moment, it felt like the ball went out of the play. But this is where, Lokmanu exercising extreme caution, made sure it does not, remains intact, remains in play, and gives that pass. And we've seen Lokmanu pull off goals like that. And he's done that, but cannot really celebrate. It's a job half done, because now we've known that Lokmanu concedes right after scoring, and that is exactly what has happened with him. Vicky, beautiful passing, and he scores with R9 of his own, and just like that, TT again. We are back to where we started on ground zero. Both of these clubs have scored one each. एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखेगा. अभी गेम बहुत ज़्यादा खुलता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोनों जब एक एक करके गोल कर चुके हैं, उनका फिर से वो स्टेडी गेम प्ले मेंटलिटी पे जाना आई थिंक बहुत टफ है. इस बार कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे दोनों के दोनों प्लेयर्स. एंड देखिए शुरुआत हो चुका है. कैब्रेविया लेफ्ट हैंड साइड से बेहतरीन एक रन निकाल रहे थे, बट मेसी कॉन्स्टेंटली उनके पीछे कर रहे थे और फाइनली बॉल जीते. ATKMB विकी वो इधर गलती नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक बार जब कम बैक कर दे तो आप चाहते हो कि वो मोमेंटम को आप कंटिन्यू करो और उसके साथ सेकंड गोल भी आप स्कोर कर दो, ताकि आपको एक लीड मिले, क्योंकि आप नहीं चाहते बार बार चेस करना. बट फाइनली इस बार लोकमान्य एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश था इधर ATKMB के डिफेंस को, बट विकी बहुत शांत होके फोकस करके इधर अपना जो डिफेंस है उसको सजाए है. बट इस बार देखिए ये पास बहुत ज्यादा क्रूशियल था. रोनाल्डिनियो टुवर्ड्स रोनाल्डो, कोशिश था एम्बापे के लिए, बट वो पहुंच नहीं पाया. और उसको समझे पहले से लोकमान्य समझ चुके थे कि एक पास आएगा, तो इसी वजह से एडवांस कराया गया था प्लेयर को, जो कि बहुत ही अच्छा. और यही तो गेम चाहिए, एकदम इंटेंस गेम चलता हुआ. एंड आई थिंक केरल ब्लास्टर्स एंड ATKMB दोनों ही क्लब्स के जो फैंस हैं, अभी उनका फ्री में शायद मैनिक्योर चल रहा होगा. Yeah, I mean, at this point, surely just not a nail biter. Could also go bald. And right now, this looks good. Good routine by Vicky. But look, Manu, very alert, very alarmed. And we approach that 70th minute. This is where teams start making those changes, and those important changes which kind of decide the course of the game. Look, Manu going for a longer pass this time. Instantly switches sides around. Captivia passing on towards Virgil van Dijk. Every single move now. Look at Vicky. He's starting to look a little bit more threatening. He's starting to fight for the ball, which initially he wasn't doing a lot. He's playing a little bit more defensive there, but he realizes the gravity of the situation. And now look, Manu trying to just pace in with Captivia. Has lost the ball to Hakimi. A little bit of a man advantage, but no. Rudhulit changes it again. And now, again, the left back has been triggered for a run. And look, Manu trying to replicate something very similar with Mbappe. Passes it on to Jairzinho. Gives a pass towards Jude Bellingham, but does not have a lot of passing options. Again, chaining those passes. Back and forth, a little bit of tiki-taka there, but no. Vicky's Rudhulit comes in and saves the day. Saves them from doom. As of now, because now merely 10 minutes remaining, and Lokmanu has almost queued that pause from the past 10 minutes.
and he hasn't gotten a chance to make those changes. And certainly a draw would break my heart. देखिए, अभी आखिर के कुछ समथिंग 8 मिनट बाकी है और मुझे तो लग रहा है कि शायद ड्रॉ के साथ इधर खत्म हो जाएगा ये गेम, क्योंकि कोई भी आखिरी मोमेंट पे गलती नहीं करना चाहेंगे और इसकी वजह से वो रिस्क भी नहीं लेंगे। बट अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके गए कोई भी, ओह, तो हो सकता है मौका बन रहा है। एम्बापे बॉल कंट्रोल अभी भी मौजूद, बॉल का पूरा कंट्रोल था, बट नो, आप बॉल ऐसे लूज नहीं कर सकते। बट विकी, उनके लिए आखिरी मोमेंट पे एक चांस बन रहा है क्या? विथ रोनाल्डिनियो टुवर्ड्स हकीमी, क्या ये आखिरी वो मौका हो सकता है जिससे कि एक सनशाइन मिले एटीके मोहन बगान को? देखिए, आखिरी मोमेंट पे क्या होगा समझ में तो आ नहीं रहा। बॉल लूज के फिर से अटैक देखने के लिए मिलेगा। कुछ भी हो सकता है इधर से, बट शायद ये ड्रॉ के साथ ही खत्म होता हुआ दिखे। yeah, I mean, could definitely be, but we know Lokmanu had scored a final moment goal, but this time will not happen. This time he has been contained and did the same to Vicky also. This matchup ending in a tie, a very crucial affair. Nothing separating both these clubs over here. Both are so desperate. They cannot afford to lose. Did not make a lot of mistakes on those defense though. Attacking wise, both of them kind of had gotten repetitive at a certain point. We could see Lokmanu, having two style of play. Either he was going for a cutback, or he was just trying to change the passes around around the box, and then trying to go for a shot. We did not see those crosses coming in. He did not go for those trivelas, two or three other things which he should have tried. Explored at least. And the same can be said for Vicky at the same time. And defensive superiority being exercised by both these players. And nothing separating the two. But this sort of leaves us with two more games in this matchup. The next one will be a co-op game where Kerala Blasters FC, last time they went up against Odisha FC, that is where they kind of messed up, right? A 2-1 scoreline, and out of which I think even one was a pen. So, Odisha FC had punished them. Otherwise, Kerala Blasters FC would have been in a much better position than they are right now in. And Lokmanu's last minute goal against Vagya, that kind of changed everything. And he managed to salvage at least 1 point. But taking a look at the scorecard over here, yes, it's one each apiece so far in this important matchup. And now it comes down to the co-op. एंड ये कोऑप आई थिंक दोनों ही क्लब्स के लिए शायद इस पूरे सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा टफ रहा है। हालांकि हम लोग ATKMB के लिए बोल सकते हैं कि हाँ, उनका कोऑप थोड़ा बेटर था, बट केरला ब्लास्टर्स एफसी, उनके लिए जो सिनेरियोज है वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कभी कभार प्रॉब्लमेटिक दिखा है। तो वी डोंट नो लाइक इस पे क्या रिजल्ट आ सकते हैं, बट पहला गेम बहुत अच्छा था दोनों ही तरफ से। बीच में कुछ देर के लिए विकी ने फिर भी ट्राई भी किया था, लाइक वो लॉब पासेस खेले, थ्रू पासेस खेले, जिसके बदौलत के इनकी कुछ अटैक्स भी बने थे, बट अचानक से उन्होंने बंद क्यों कर दिया वो भी मुझे समझ में नहीं आया। शायद वो थोड़ा सेफ खेलना चाह रहे थे। एंड उसी जगह पे जितना हम लोग अभी देख पा रहे हैं इस पूरे सीजन के अंदर कि लॉब पासेस का मेटा कहने की बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अगर लॉब पासेस सही खेल पाते हो देन आपके पास गोल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अभी तक जितने भी हम लोग टॉप प्लेस की बात करें, वो चाहे इमाद की हो जाए या फिर हम लोग जेनेसिट की बात करें, फिर वागया, अरविंद, उसी के साथ अरविंद तो वैसे आज खेले, और इसके पहले अगर देखा जाए तो आदि जीमा, सबके सब इधर बहुत ज़्यादा हम लोग को थ्रू पासेस एंड लॉब पासेस खेलते हुए दिखे। तो वो डेटा रहते हुए भी जो है वो यूज़ नहीं किया गया अभी तक लोकमान्य एंड विकी की तरफ से। आई थिंक वो थोड़ा बाकियों के गेम देख के अपना जो स्टाइल है वो होता नहीं कि कभी कभार आप मॉडिफाई करते हो, पूरा चेंज करना तो वो पॉसिबल नहीं है, बट आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो जिस तरीके से अभी मेटा चल रहे हो उसके हिसाब से। बट हाँ, 1-1 तो किसी की तरफ से भी कुछ नहीं गया, हम लोग सेम पेज पे हैं। बट ये कोऑप, आई थिंक ये कोऑप मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा ATKMB की तरफ ज्यादा दिख रहा है। ATK Mohun Bagan, you say? But I think there's that shroud of mystery around Kerala Blasters FC because they've kind of been
quite fickle, to be honest. Then there are days where they perform really well, where you will be like, oh wow, and there are days like, what? So, they've kind of been at the extremes, not at like, you could say that they're a very consistent team in a co-op game. So, this is one of those days where we have already started with an upset. Of course, ATKMB would be the favorites to win this one, but can't really rule out Kerala Blasters FC. Afnan, Yeah. the hero, is going to play up next, and that is going to be a very interesting matchup against Shubham. But now let's talk about what's on the line. For Kerala Blasters FC, getting a win is absolutely necessary in this co-op game, because if they don't, then they'll be in a very bad situation, because then you're giving ATKMB a chance for a let's consider pieces away. So if ATKMB wins this co-op game and they go on to lose the final individual game, they will still salvage 1 point from this fixture, which is still fine for them in terms of their qualification, and they will go on to face the decider matchup against Hyderabad FC. But if Kerala Blasters FC get a draw over here and do not win the next matchup, then they're anyways giving 3 points away. Even if they get a draw over here, or even let's say a win, and then they lose the next match, then this tie ends as a draw, which means that Kerala Blasters FC will end up sharing points, and Kerala Blasters FC, they are not in the position where they can afford to share points anymore. भाईचारा खत्म करना पड़ेगा. अब पूरा points खुद के जेब में ही डालना पड़ेगा अगर अगला सांस लेना है तो. So a must-win matchup for both these clubs, because Kerala for ATKMB, they have been one of those clubs, because one of the most fan-favorite clubs, I must say, in the entire ISL also, because such an old club with such a rich past, such a rich history, and they have just been the winners. And it would be such a shame if we do not see them playing in the playoffs, especially considering how miserable their last season was, right? So the fans have had a good time this season. The fans had moments of joy, but this joy needs to go on, needs to last also in the playoffs, because for me personally, ATKMB have been the dark horses in this tournament, because look at the top 4, top 5 that we have. All very set players, all very known players in the community. Don't take me wrong, these players are also quite recognized, but when you sort of put them against the rest, I feel they have that underdog story, they have that dark horse story going, where when they have been kind of disregarded, that no, ATKMB can't really expect much from them, and they suddenly have proven everybody wrong, especially that Kolkata derby. That was special. What Afnan did to Shayantan, well, he has never really recovered from that. And East Bengal FC, they're also out of the equation already. So now I'm just waiting with, just hoping to see a cracker of a game and to find a conclusive result in this matchup. मी टू, क्योंकि इधर अगर ड्रॉ हो जाता है देन वी नो कि क्या होने वाला है, और उसके बाद शायद केरला ब्लास्टर्स एससी भी इधर इक्वेशन के बाहर चले जाएंगे. और स्पेशली जैसे कि आपने कहा कि वो जो कोलकाता डार्बी था, उसके बाद 2 क्लब्स, कोई ऊपर जाने वाला था, कोई नीचे जाने वाला था. तो उनमें से एटीकेएमबी ऊपर गए. उनको उसी गेम से, अगर हम लोग पूरा उनका देखें अभी तक के जर्नी, तो वही एक पर्टिकुलर गेम था जिसके बाद से एटीकेएमबी जस्ट बैक टू बैक बेहतरीन परफॉर्मेंस करते गए, और उसी गेम के बाद से ईस्ट बंगाल एफसी बैक टू बैक वो हारते गए. तो कहीं ना कहीं उधर वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम था इंडिविजुअल क्लब्स की अगर बात किया जाए. बट आज जिस जगह पे आके खड़े हुए हैं केरला ब्लास्टर्स एफसी, आई थिंक ये एक बहुत बहुत अच्छा स्टेटमेंट देके जा रहा है, नॉट ओनली फॉर दिस टूर्नामेंट, आई थिंक पूरे इंडियन फीफा कम्युनिटी की तरफ से, कि 2 ऐसे प्लेयर उभर के आ रहे हैं जो कि शायद जो फैंस के बीच में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट इस बार जिस तरीके से खेले हैं वो पॉपुलर बन रहे हैं. क्योंकि एक तरफ आप लोकमान्य एंड शुभम को रख दीजिए, ऑन द अदर एंड अगर आप वीके और अफनान को रखेंगे, तो ऑब्वियसली लोकमान्य के जो फैन फॉलोइंग है, फिर शुभम के जो फैन फॉलोइंग है, वो या हम जानते हैं कि उनको ज्यादा लोग जानते हैं. लेकिन इस बार जिस तरीके का गेम दिखाए हैं अफनान एंड विकी भी कहीं ना कहीं एक साथ ही खेल रहा है, ऑब्वियसली एक क्लब है, तो इनका जो रन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है.
तो इसी वजह से आज हम लोग कंसीडर भी कर रहे हैं कि शायद थोड़ा सा ज्यादा चांस है इन दोनों का, वो भी किन के खिलाफ, लोकमान्य एंड शिवम के खिलाफ, जिनको अगर मैं 2-3 साल पहले जाके बात करता तो शायद लोग मुझे बोलते तो क्या कह रहे हैं, बट इस बार वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है सिनारियोस बहुत बहुत ज्यादा बदलते हुए दिखे हैं और मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है इधर फीफा कम्युनिटी के लिए कि न्यू प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं और वो इधर आके इस लेवल पे टक्कर दे रहे हैं बाकी खिलाड़ियों को। बट इस गेम पे देखिए मुझे तो लगता है कि केरल ब्लास्टर्स को प्रेशर झेलना होगा, क्योंकि केरल ब्लास्टर्स अगर इधर से 2 गेम जीत भी जाते हैं फिर भी उनके लिए वो पूरा ये नहीं रहेगा कि वो इधर क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2 जीतेंगे भी इधर से तो उनको ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट तक वो पहुंच सकते हैं। Yeah, I उस think. जगह पे हो या Yeah, go आई on, थिंक go on. एटीकेएमबी के लिए मे बी शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, बट ऑन द अदर हैंड हैदराबाद एफसी एंड चेन्नई एफसी उनके पास फिर भी मौका रहेगा कि वो इधर से आगे बढ़ जाए। तो लाइक केरल ब्लास्टर्स के लिए उनके कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा, तो अभी भी एटीकेएमबी के लिए कंट्रोल में है उनके कि अगर वो इधर से बैक टू बैक 2 गेम जीतते हैं तो वो फॉर श्योर क्वालिफाई करने वाले हैं। Yeah, and finally, enough banter, enough discussion about them. Let's just directly head in onto the action and find for ourselves who gets the taste of victory and who drops the dirt. Kerala Blasters FC from left to right in their black jerseys and ATKMB in their white from right to left. Got Lokmanyu and Shubham on one side, Vicky and Afnan on the other. And right off the bat, we could see Kerala Blasters FC making that one small mistake. So you could see those, still the synergy kind of missing. And then initially when you just start off the game and you kind of make a wrong pass, that's where you kind of get a little tilted sometimes, just lose your chain of thoughts. And now if they concede from this one, then that would be disastrous. But danger averted for the players. But right now, Kerala Blasters FC again on an attack. ATKMB haven't been fighting for the ball. Finally went in for a charge in, but at that moment they capitalized and KBFC instantly made a pass over there. Oh, all right. Little bit of wrong reads coming in from their side, trying to pass to one player, goes to the other, and that sort of kind of breaks the flow that they're going in. Again, a build-up, trying to go for a cutback there, deep on the wings. And now with Ruud Gullit towards R9, and this is where he has to take a shot. Indeed, he does, but Van der Sar makes a crucial save. But with Mbappe, wanted to turn and shoot, but before that wanted to make sure they had some control over the ball. Now exposed to a counter-attack, a nice lob-through pass towards Lionel Messi, who paces in from that right wing, but was out of options to pass initially, and went for a back pass with Kylian Mbappe takes that shot, hits the crossbar. Oh my God! इधर क्या हो रहा है, इधर कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो टीके का जो शॉट है वो याद आ गया। ओह माय गॉड, सॉरी आई थिंक वो टीका थे अरविंद के खिलाफ, और वही चीज हो रहा था इस बार। घूमे शॉट लिए, फिनिश भी हुआ और फाइनली केरला ब्लास्टर्स एफसी पहला गोल अपने क्लब के लिए जड़ चुके हैं इस को पास पे। एंड देखिए इधर गोल्स की जरूरत है, आज दोनों ही क्लब्स ऑल आउट जाने वाले इस कोऑप मैच के ऊपर, तो क्योंकि दोनों को ही पता है कि ये जो जीतेंगे उनके पास बहुत सा कंट्रोल जाएगा, और स्पेशली फॉर केरला ब्लास्टर्स एफसी उनको तो जीतना ही जीतना है इस गेम को। तो वो शुरुआत काफी अच्छा पॉजिटिव नोट पे किया है, बट एटीकेएमबी पिछली बार भी यही हुआ था। विकी जस्ट गोल कंसीड करने के बाद ही 5 मिनट के अंदर उन्होंने गोल कन्वर्ट भी किया था। एंड एक बार क्या हुआ, ऐसा ही मौका बन रहा है, क्या वैसा ही सिचुएशन फिर से दिखेगा। डिफेंस बेहतरीन इस बार, शुभम एंड लोकमान्यू बहुत बेहतरीन एक कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हुए डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, दोनों प्लेयर्स को बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सो काफी अच्छा गेम अभी तक डिफेंसिवली तो देखने के लिए मिला है केरला ब्लास्टर्स की तरफ से। Yeah, and you kind of it has been a pattern with Lokmanyu, right? Every single time he scores and the next moment he concedes. But thankfully he's got Shubham to aid him. And talking about Shubham, recently we had an article published where he came for an interview and he expressed his thoughts on
The ongoing eISL has been a part of both the seasons so far, and quite a well-written one. That surely don't forget to check that one out. But yes, let's get in to this matchup where Kerala Blasters FC, the Yellow Army, has gotten an early initial lead. Now this time attacking from that right wing, looks for the back, but this time the ball crossed over the line, as a result of which eventually ended as a goal kick. वाओ ATKMB अभी देखिए पासेस तो वो खिला रहे हैं, लेकिन केरल ब्लास्टर्स एफसी वो अभी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जा रहे हैं, वो अपना स्ट्रक्चर प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। और अभी तक एक बार के लिए भी मौका उन्होंने दिया नहीं है कि एटीकेएमबी को लाइक वो उनके डिफेंस पे आके शॉट ले। एक जो शॉट लिया गया था, जो बार पोस्ट पे लगा था, वो बहुत दूर से लिया गया था, लॉन्ग रेंजर था। बट इस बार मौका है, इस बार विद लियोनेल मेसी हो सकता है कुछ मैजिक, लेकिन उसके लिए प्लेयर्स चाहिए क्लोज जिनको वो पास कर सके। लियोनेल मेसी, बट लूशियो एक बार फिर से, जिसके लिए लूशियो को खिलाया जाता है प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए। बट देखिए थ्रू बॉल खिलाया जाएगा, ये मुझे लग रहा है कि शुभम का ही पास था, क्योंकि लोकमैन यूजुअली ये जो थ्रू पास लॉब पासेस है वो खिलाते नहीं है। बट शुभम को हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा लॉब पास थ्रू पासेस के ऊपर रिलाय करते हुए, एंड वो तो प्रॉपरली एग्रेसिव मोड पे चले जाते हैं स्टार्टिंग से ही। तो क्या ये सेकंड गोल हो सकता है? पास आएगा, बट माल्डिनी द सेवियर नहीं बचाते तो फॉर श्योर गोल था इधर, रोनाल्डो जिस जगह पे थे। Oh yeah, it certainly could have been one of those goals, right? But this time, you know, going for that same repeating pattern, I think somewhere down the line, maybe ATKMB are starting to get conditioned, and I can smell a goal, an equalizer being scored by ATKMB. Now playing a little long there, received with Hernandez, but no, Hakimi was there to challenge him, and so does he win the ball. And now Mbappe, he just uses blistering pace. Maybe no, did realize that did not have a lot of passing options there. And Kerala Blasters FC taking the sweet time around the midfield, just kind of trying to frustrate the players of ATKMB and trying to have them dispositioned a little bit. But ATKMB being resilient, did not hudge, and instead have taken over the ball. Now they will be building an attack of their own, and we've seen ATKMB trying to be a little crafty. You know, they've gone for those longer balls. They've been trying to place those through passes. Just need to get one play right, and they're right into this game. Now with Ronaldinho, all right, a lot of missed passes, a lot of hasty ones, and the half-time whistle blows, and Kerala Blasters FC, with just that one goal advantage, kind of in the winning position right now. But we have seen they kind of tend to lose that lead, so they need to score a few more goals to sort of ascertain their dominance over here in this game. एंड एक चीज हम लोगों ने बार बार देखा इधर एटीके मोहन बगान की तरफ से, कि वो जब भी अटैक पे जा रहे हैं वो अपने राइट विंग के थ्रू ही जा रहे हैं, वो चाहे मेसी के साथ हो, वो कभी कभार हकीमी के साथ जा रहे हैं, बट वो अपने लेफ्ट साइड को उतना ज्यादा यूटिलाइज करते हुए दिखे ही नहीं। सो जब तक वो होगा नहीं तब तक शायद प्रॉब्लम्स तो होंगे, क्योंकि पता है इधर ऑलरेडी केरला ब्लास्टर्स एफसी को कि उनके राइट साइड से ही आएगा, उधर से एक पास जाएगा एंड देन जाके करेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जा रहे हैं। तो दोनों ही जो फ्लैंक्स है, दोनों ही फ्लैंक्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। मिडफील्ड पे इधर खिलाया जाता हुआ मेसी को, जो कि अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है इन मेटा, लाइक सब लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीच में अगर आपको वो क्रिएटिविटी मिलता है एंड वो जो ट्रेवलिंग पावर्स है एंड पास है वो अगर मिलता है, तो ऑब्वियसली वाई नॉट, आप क्यों नहीं यूज़ करेंगे मेसी को। बेलिंगम टुवर्ड्स मेसी, अटैक पे जा रहे थे एटीकेएमबी, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से एफिशिएंटली बॉल इधर छीना गया राइट हैंड साइड से। एम्बापे ऑलरेडी रन निकाल चुके थे, बट देखिए एक गलत पास, बॉल चला गया। आई थिंक थोड़ा पहले दे सकते थे इधर रोनाल्डो को, क्योंकि वो पोजीशन पे आ गए थे। Yeah, could have done. You know, there was that moment where they could have capitalized and maybe gone on to score a goal. But this match, you could see, right? Oh, this one long ball to change a lot of things. Theo Hernandez receives it,
and he's onside at this point with Ruud Gullit telling him he's trying to find out, man, where does he pass on to? Not a lot of passing options, and Kerala Blasters FC have been so good on their defense. Haven't been losing a lot of balls there, stealing them out and going for those charge tackles, and have been applying so much of that pressure. ATKMB barely able to breathe over there. But now with Hakimi, goes for a ball roll, still tries to keep the ball in play, has indeed succeeded in doing so. But there you go, those missed passes are coming down to haunt ATKMB. They've been trying desperately, and ATKMB have been facing a lot of difficulties, especially considering the fact that Kerala Blasters FC, they've been quite tight on their defense. And if you get chances like that, you're not supposed to miss. यस एंड आप अगर ये सब चांसेस मिस कर देंगे फिर उसके बाद मुश्किल है। और केरला ब्लास्टर्स ऑलरेडी एक गोल के साथ आगे हैं। पिछला ड्रॉ था, अगर ये जीतते हैं देन प्रेशर अफनान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अफनान भी इधर ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम फुल्ली प्रेशरलेस खेलने वाले, वैसा होने वाला नहीं है। लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा ट्राई था, बहुत अच्छा ट्राई था, बट इस बार गोल हो नहीं पाया क्योंकि वैंडेसार मौजूद थे और वैंडेसार चौकन्ने भी थे, तो उधर सेव होता हुआ दिखाए। लेकिन कुछ इस तरीके के अटैक्स की जरूरत है एटीकेएमबी की तरफ से, उनको कंटिन्यू करना होगा। एक दो अटैक हो रहा है या बहुत अच्छा, बट और भी करने की जरूरत है ताकि एटलीस्ट एक गोल आए। एंड शायद ये पॉज के साथ शुभम भी लोकमान्य के साथ कुछ डिस्कशन किए कि क्या गलती हुआ था एंड ऑल, एंड मोस्टली इस बार उसको ठीक करना चाहेंगे, क्योंकि अगर नहीं करते फिर कहीं ना कहीं मुश्किल है बढ़ता हुआ दिख सकता है केरला ब्लास्टर्स के लिए। Yeah, I think at least for now, Kerala Blasters FC, they will have to hold on to their dear life, because if they concede a goal, then the pain is going to be excruciating, because we know how much this match means for them. And their defense has been good, but at the same time, attacking wise, you would expect players like Lokmanyu and Shubham to score a few more goals. And ATKMB, well, they've given them those avenues, they've given them those opportunities, but we have seen on various occasions they've been kind of relying on just trying to score that goal through those cutbacks. I want to see something crafty. I want to see either Shubham or Lokmanyu go for a Trivela shot, just surprise us, just entertain us, because now nearly 26 minutes remain into the game, and this corner looks like it's going to be a long one. You could see Ruud Gullit clearly asking for the ball, but they decide to go for a shorter one. बिल्कुल, और देखिए इस बार कॉर्नर को कुछ अलग तरीके से अप्रोच किया गया था। यूजुअली हम देखते हैं थोड़ा सा दूर जाते हैं देन बैक पास होता है उधर से, बट इस बार कोशिश था कि ड्रिबलिंग करते हुए अंदर आए एंड साइड से वो पास खिलाया जाए, बट वो होने नहीं दिए। केरला ब्लास्टर्स से ऑलरेडी समझ चुके थे कि कुछ ऐसा होने वाला है, और कुछ ज़्यादा था भी नहीं ऐसा कि समझने में मुश्किल होता। बट केरल ब्लास्टर्स एफसी, उनकी तरफ से तो अभी यही कोशिश होगा, जितना ज़्यादा हो सके बॉल होल्ड करो, गेम को डीप डाउन आखिर तक लेके जाओ, और बीच में अगर मौका मिले तो एक गोल स्कोर भी कर दो, क्योंकि एक गोल का फासला सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कभी भी एक इक्वलाइजर आ सकते हैं, देन बूम, पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन बॉल जितना अपने पास रखेंगे उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेंगे इधर एटीकेएमबी को, क्योंकि जब ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जिधर आपको ज़रूरत है गोल की, करना ही करना है, उस जगह पे जाके आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब आपके पैर पे बॉल नहीं आता और अपन सिर्फ 1-2 टिकी टाका करते रहते हैं। लेकिन देखिए, ये गेम अगर इसी स्कोर लाइन के साथ खत्म हो जाता है देन एटीकेएमबी के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और अफनान अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखना होगा, क्योंकि देखिए एक ही पॉइंट मिलेगा। अफनान चाहे जीते, फिर भी जितने गोल से भी जीते, पॉइंट सिर्फ एक ही मिलेगा। सो वो इधर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। सो ये गेम या आखिरी 20 मिनट नॉट ओनली फॉर केरला ब्लास्टर्स, इधर एटीकेएमबी के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो एक इक्वलाइजर दागे, एटलीस्ट ये डिसाइडर तक पहुंचाए आखिरी गेम तक, और एल्स इधर मुझे लग रहा है कि शायद फेल कर सकते हैं एटीकेएमबी। Yeah, I mean, at this point, this is basically where they're going to throw the entire kitchen sink, right? Because honestly, ATKMB, they have been trying
various different ways of approach. But so has been the case with KBFC's defense that they're not able to breach through, not able to break through, and maybe going for those longer shots could help them net one in, because ATKMB, at the worst possible case, they desperately need a draw from here. And if the score lines remains intact like this, then Kerala Blasters FC, they'll have that advantage. They'll secure that draw, and Afnan has to win that game against Shubham, which is still possible, right? Afnan is an amazing player. He's done that in the past. He can do that tonight. But you would want those 3 points. But look at that. Now, finally, seeing a different style of play coming in from KBFC, where they're kind of trying to little threatening, going for those crosses. In fact, a German cross. We could see that from a left back being forced and played, but not the way it was received. Now the ball again in KBFC's possession. There you could see R9 has asked for a run, but have instead opted for Kylian Mbappe. Similar routine, maybe looking for a cutback. And will they find one? Yes, they do, and tap it in, and this could seal things up. Kerala Blasters FC, a huge sigh of relief. They know that they have got this in the bag, and no way they could lose this or drop this game from here. You could see 4-4-2 for ATKMB. They've gone ultra attacking, and Kerala Blasters FC also decided to respond with a 4-2-2. And from here onwards, I think Kerala Blasters FC have all the chance to go for maybe a 5-4-1. But what a play being made. Goes that extra mile with Kylian Mbappe. And then that cutback. And all R9 had to do was just seal the deal. इसी के साथ कहीं ना कहीं केरल ब्लास्टर्स एफसी अपना काम जो है वो इस गेम के लिए तो एटलीस्ट कर चुके हैं और आई थिंक ये जो पॉज लिया गया है ये शायद पूरा जो 40 सेकंड है उसको भी यूज करना चाहेंगे केरल ब्लास्टर्स एफसी अभी अपने एक्सपीरियंस को इधर गेम के अंदर लेके आ रहे हैं और प्लेयर्स में भी थोड़ा बहुत फॉर्मेशन में भी चेंज होगा थोड़ा डिफेंसिव जाएंगे लेकिन ये जो पूरा 90 सेकंड्स का जो ये ब्रेक है जो उनके तरफ से लिया गया जो पॉज लिया गया है ये पॉज एक एक सेकंड के साथ साथ प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा है एटीकेएमबी के ऊपर क्योंकि एटीकेएमबी को अभी सोचने का मौका मिल रहा है इस जगह पे रहते हुए कि अगर हार जाएंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा एंड आई थिंक ये माइंड गेम बहुत जगह पे हम लोगों को अप्लाई होता हुआ दिखा है और एक बार फिर से इधर अप्लाई होता हुआ दिख रहा है केरल ब्लास्टर्स एफसी फाइनली उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कुछ सिनेरियोज क्रिएट होते हुए फॉर्मेशन चेंज करेंगे मोस्टली क्योंकि उनको अभी डिफेंसिव खेलना है ज़्यादा अटैक पे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 गोल हो चुके हैं 78 मिनट है सिर्फ 12 मिनट का गेम बाकी है और रोनाल्डिनियो को बिठा के इधर लेके आए गए पहले हालैंड भी इधर आएंगे सो फिजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट बेहतरीन 2 चेंजेस देखने के लिए मिला बट जस्ट गेम अभी सिर्फ 10 मिनट का ही बाकी है Yeah, and you know, history is a testament of a fact that one of those teams, it was East Bengal FC, the arch nemesis of ATKMB. They had scored an equalizer, especially being 2 goals down, and in quick succession. And Kerala Blasters FC that night was haunting them, and might still haunt them. So they know that they have to exercise extreme caution. They have to be very patient, and will have to keep as much of ball as they can possibly do. Over here, getting Erling Haaland up. And now, I think they're just going to hog over the ball at this point. Switch passes, keep frustrating ATKMB. At least take it down to that 89th minute. There where you can feel a little bit more safer. But look at them. Just making sure they don't take their chances anymore. They don't try to give the possession away because they know of what had happened in the past. And now, with that being said, Eusebio has created a beautiful opportunity. Takes that shot, but it kind of felt like the ball got stuck on Van der Sar's gloves, as a result of which ATKMB can now break out for an attack. So we've got Jesnio just pacing in through that right wing with Pele. Went for a heel to heel, but was unable to complete that shot.
And as a result, yes, this match is pretty much over. Kerala Blasters FC will be getting the victory over here, because despite the fact that even if ATKMB would have scored, they still would have been 1 goal down. And Lokmanu, I don't know why is he cussing himself. Maybe feels like he could have ended things then and there only in that individual matchup against Vicky. But it's all right. It has now come down the strong shoulders of Shubham and the nimble ones of Afnan. But still, we know Afnan. He's one quick lad. He can turn things around, because for ATKMB, still a win over Shubham could make sure that they salvage 1 point. And that would completely change things around, because Kerala Blasters FC, then they will get eliminated. And ATKMB will still have a chance to breathe and fight for the playoffs. एंड उसी के साथ कहने की अभी जिस तरीके के सिनेरियोज बने हैं और पिछले कुछ मैचेस को अगर देखें तो शायद अफनान के चांसेस है इधर बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं 5-5 गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं वो भी कंटिन्यूसली एंड वही जगह पे शिवम की भी अगर बात किया जाए उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर को हराए हैं इस पूरे सिर्फ इंडिया के नहीं एशिया के वो है सीजे उनको वो भी 3 गोल से तो दोनों ही इधर बिग मैचेस के प्लेयर हैं और करेंगे बट जो गोल्स इधर आए थे लाजवाब था केवल ब्लास्टर्स से इसी की तरफ से और लोकमान्य इसीलिए शायद अपने ऊपर थोड़ा सा जो है वो खुश नहीं थे क्योंकि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं वही सोच रहे थे शायद लोकमान्य अगर वो हो जाता तो शायद अफनान से वो जो एक थ्रेट अभी भी बना हुआ है वो शायद नहीं रहता क्योंकि देखिए एटीकेएमबी के पास तो एक सेकेंड चांस रहेगा अगर ड्रॉ भी करते हैं लेकिन वो चांस केरला ब्लास्टर्स के पास नहीं रहेगा तो इसी वजह से प्रेशर केरला ब्लास्टर्स के ऊपर ज़्यादा है तो कहने की बहुत शानदार गेम गया वैसे तो बहुत इंटरटेनिंग गेम था बट आखिरी गेम बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा बट या ये था स्कोरबोर्ड 2-0 के साथ ख़त्म किए केरला ब्लास्टर्स से अपने को टीम को Yes, and well, this game, let's see the next one. That is going to be a really important one. Lokmanu was quite displeased because he's kind of choked there, right? To be honest, because always tends to get that first goal and then the next moment he tends to concede. But thankfully, Lokmanu and Shubham, the duo, did not make any mistakes anymore. Their defense was looking a lot better, much better, exactly what you would expect. Attacking wise, also those 2 goals scored, and it's fine if you're scoring 2 goals under pressure. So now at least it's set in stone that no matter what the outcome will be, Kerala Blasters FC will take home 1 point. But this is where the dilemma arises. This is where is the fact that they cannot settle with a single point. They will have to win this game and will have to take those 3 points. And still, those 3 points won't ensure their qualification, right? Because the next matchup that they have is going to be against Chennai FC only. And that will pretty much be the decider. Whoever wins that, they qualify. It's as simple as that. And those calculations are getting really tough in my mind. But talking about this game, right? I think again the defense of Kerala Blasters FC was pretty much solid. ATKMB, they tried a lot of variations in their attack, but they were kind of unable to just break in the defense there. And even those shots they were taking wasn't up to the point. And at a point when I felt that they should have gone for a few longer shot attempts, because this is what Imad tends to do, right? Imad, when he realizes that he's not he's not able to break through the defenses of his opponents, what he does is then he resorts for those finesse shots, then he resorts for those trivelas. We have seen him also trying to go for those crosses also. These sort of variations were coming in, but it felt like they had not practiced that routine. And it's very important to practice. It's very important to make your runs properly. And if you trigger that, well, Imad had been doing that in his solo games, but in a co-op matchup, TT, it gets much more difficult than that. You literally have to be having the same rhythm. You have to be on the same graph, and same pace has to be exercised so that you understand what your teammate is trying to do. And it's very difficult to ask so much from these players, especially considering how less of a time they had together with them.
but ATKMB, they would not be happy with this result, and now there will be a lot of pressure on Afnan. But we know he's a man who kind of tends to thrive under situations like that. Especially one of the biggest examples is right in front of you, the Kolkata derby. When it came down on his shoulders, that 9-2 scoreline is how he thrashed Ben 07. And I don't know if against Shubham it's going to be difficult, but yes, I feel that Afnan can do it. या ऑल्सो लाइक मैं भी उसके साथ एग्री करूँगा, क्योंकि देखिए अफनान बहुत बहुत ऐसे मैचेस हैं जिस पे उन्होंने क्लच करके निकाले हैं, बट सेम विथ शुभम एज वेल, शुभम ने भी किया है। तो या थोड़ा बहुत वो होता है ना कि दिमाग कह रहे एक का नाम, दिल कह रहे कि दूसरे का नाम, और दिलो दिमाग में चल रहा है अभी जंग। तो वो क्या होगा क्या नहीं, रिजल्ट्स तो वो तो गेम के अंदर ही पता चलेगा। और देखिए इधर एटलीस्ट ये चीज़ तो कन्फर्म्ड है, ATKMB के लिए इस जगह पे 1 पॉइंट भी काम कर जाएगा, उनको 1 पॉइंट के लिए जाना ही जाना है। लेकिन अगर वो आज हार भी जाते हैं, फिर उनके खुद के कंट्रोल में सब कुछ नहीं रहेगा, उनको फिर बैठे रहना होगा कि ओपोनेंट लाइक 2 क्लब्स अभी है, हैदराबाद FC एंड चेन्नई FC, उनके तरफ से कुछ गलती हो जाए एंड देन जाके सिनेरियोज जो है वो उनके फेवर पे आ जाए, और एल्स इधर कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि हैदराबाद FC भी अगर चले गए, चेन्नई FC भी अगर चले गए, देन ATKMB के पास कोई भी चांस नहीं रहेगा। और देखना होगा लाइक क्या रहता है इसके बाद पूरा सिनारियो। आई थिंक अभी कैलकुलेशंस इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका है, शायद कैलकुलेटर लेके बैठना होगा हम लोगों को कि हर एक मैच के बाद ठगड़क 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 ये पॉइंट भी निकल रहा है, ये होगा। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ होगा। बट देखिए हम इतने प्रेशर में हैं, हम इतना कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्लेयर्स कितने ज़्यादा प्रेशर में होंगे, और उसके बीच में भी डिलीवर करना ये बहुत टफ है। और आई थिंक वो इसीलिए शायद हम लोग पहले भी कह रहे थे कि जो इस क्रिकेट से नहीं कर पाएंगे वही इधर आके Yes, and it is the kickoff right now, folks, and the moment has finally come. KBFC from left to right, and ATKMB from right to left. It is going to be Shubham against Afnan. A very, very important matchup that will decide the fate of both these clubs. Do they make it to the playoffs, or do they crumble? And both these players have had moments. You know, Shubham is one of those very few players who can go on to say that he has beaten CJ. And Afnan, we know what he had done. We discussed about it, and a very quick chance that Shubham wanted to create there with that long ball, but Afnan being present there and defending it. वो अगर पास नहीं रोकते देन शायद शुभम के लिए ये ग्लोरियस मोमेंट हो सकता था, बट शुभम एक गलत पास भी किए। तो ओवरऑल कहने की कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से उधर कुछ कुछ गलती था, कुछ कुछ बेहतरीन पोजीशन से, बट स्कोर लाइन अभी भी सेम। अगर ड्रॉ पे खत्म होता है ये गेम, फिर भी केरला ब्लास्टर्स FC इधर से 3 पॉइंट लेके जाएंगे। तो अफनान को एटलीस्ट 1 गोल का जो फासला है वो बना के रखना है, वो भी एडवांटेज के साथ। रोनाल्डिनियो, शोलीत, बेलिंगम, एंड देखिए थोड़ा बहुत पासेस तो इधर करने होंगे ही, लेकिन उसके बीच से ये चीज़ बार बार करते हैं अफनान, और एक बार फिर से देखने के लिए मिलेगा। मौका बनता जा रहा है बीचों बीच रोनाल्डिनियो, बट वर्जिल वैन डाइक सेव करेंगे। This matchup, you can see this players, everybody trying to play for those longer balls, but a nice chance created for Ronaldinho. Just wanted to play that shot, but is that a pin? Oh my God, Afnan, what have you done? Shubham knows, heart thumping, but he will not miss this one. The Viper scores. Very calm, very poised, quite astute. And Kerala Blasters FC, in the very early phases of the game, TT, they've taken the lead. लाजवाब ये गोल था, क्योंकि जो फिनिशिंग था, देखिए आप एज अ गोलकीपर कहने के आपको पता चलता है कि प्लेयर के हेड किस तरफ जा रहा है, उस हिसाब से आप जंप करते हो, लेकिन आखिरी मोमेंट तक कुछ क्लू नहीं दिया गया था शुभम की तरफ से। एंड राइट टॉप कॉर्नर, कोई मौका ही नहीं था अफनान के पास, एंड अफनान कंफ्यूज होकर राइट साइड जंप किए और लेफ्ट साइड पे खत्म हुआ। लाजवाब एक पेनल्टी इधर लिया गया,
लेकिन जो वो गलती डिफेंस पे हो रहा है, वो गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ऐसे होता रहे, मुश्किल होगा। इस बार अटैक पे थे अफनान। पर देखिए शुभम को पता है कि शुभम सिर्फ एक गोल से नहीं, वो एक मैच से भी अभी आगे है। तो प्रेशर पूरा है अफनान के ऊपर। बॉल कंट्रोल रखो, ऑटोमेटिकली अफनान इधर अपना जो मेनली कंट्रोल है वो खोते हुए दिखेंगे। वो आगे ओवर एग्रेस करते हुए दिखेंगे, जिसका फायदा उठा सकते हैं शुभम। शुभम राइट हैंड साइड से निकल चुके हैं। Oh, all right. A chance spoiled there. But it's all right. I mean, Shubham would be still happy, at least for a matter of fact, is that he got away with a goal, right? And Afnan was furious. He felt like that challenge was fair, but unfortunately wasn't, and is on that one goal deficit. He not only has to score the equalizer, but also the winner. Like TT had correctly pointed out, a mere draw is not going to help ATKMB over here. Will give them a huge setback in their dreams of qualifying for the playoffs. And for now, I mean, we've seen, Shubham has been playing those longer balls. I think he's watched few of Afnan's games and he's realized there are certain areas where he could be exposed. And this time, however, goes in through those wings. Let's see, who does it pass? Goes for a cutback with Ronaldo, but no, has been saved by Maldini. And now we've got Afnan back on trying to secure an attack. And Afnan needs to at least first start off with keeping a lot of possession over the midfield, right? It has been looking quite end-to-end. And at this point, it's kind of looking difficult for ATKMB to come back into the game if Afnan doesn't hold on to the ball. But wait a second. Oh, Shubham had a golden chance. Went for a heel-to-heel, but and that pass was kind of astray. And from here onwards, where do ATKMB go? That's a big question, because 35 minutes have already passed a stint, and Afnan is showing no intention, at least, to play around the midfield a little. Have the players get in the right spot. He's been going for an end-to-end attack. Seems very desperate for a goal, and why shouldn't he be? As now this is a golden chance with Ronaldinho wanting to take a shot. Oh, R9. He had almost managed to take the shot, but deflected at the right time. And the defenders managing to successfully get through. And now, let's see what Shubham can create from this chance. Because Shubham, after scoring that first goal, he's kind of notched down the pace also a little bit. He's been playing around the midfield a lot. He's been getting his players in. So much men to pass on to. It comes down to Afnan, where he defends the passing lane. He's got to look for that, because it's so difficult also to predict what Shubham is going to do next. Because what Vipers do, they kind of tend to hide, camouflage themselves, stay coiled up, and look for that one opportunity. And they instantly just put their fangs in the bodies of their prey. And Shubham did manage to score out of pen. And that has so far been the only goal scored inside this particular game as we approach the end of the first half. As now, I think Afnan would just be taking a moment of silence, just thinking what needs to be done over here. And I feel Afnan first needs to start applying that press on the midfield. Cannot let Shubham just move freely with the ball. Has to restrict that, has to fight for it, and then slowly build his way through, because a lot of games still remains over here. A lot can be achieved, but yeah, commencement of the second half. And if you people are thinking, why am I rambling for so long? TT is going to be back soon. Again, we live in a world where we still face those technical issues, and that's getting resolved. Once it does, yeah, you're going to hear from us both. So, yeah, commencement of the second half, and Kerala Blasters FC, that 1-0 up advantage with Afnan trying desperately to be the hero once again for the Mariners. As now,
He's got the ball, just trying to, look for those passing lanes. And look at Shubham. He's constantly, moving his players, constantly trying to just disorient Afnan's passes there. And that is how he's been building majority of his plays. But this time, Afnan pacing through that left wing, has Jairzinho, looks for that cutback, gets it with R9, takes a shot, but Donnarumma makes a save. And very interestingly, for the first time, I think in the eISL, Season 2 at least, we get to see Donnarumma. In Season 1, we had a lot of Donnarumma, and he was one of the go-to keepers for a lot of these clubs. But has opted for Donnarumma. Shubham might in, uncanny decision, but yeah, could really work out, and it actually indeed worked out for him. That was, I felt, could have been a goal, but keeper showing nice reflexes over there as now Shubham breaks out for an attack. You could see Kylian Mbappe already making that run, but a shot from his weaker foot, and it goes a little astray. It goes a little out of order, and that could have been one of the most crucial goals in the game. But unfortunately, couldn't get it, as now KBFC just hanging by the thread, just that one goal advantage helping him out. And TT, some nice chances being created by Shubham. Do you see that second goal coming? हो सकता है अगर कंटिन्यूअसली इसी तरीके से प्रेसिंग करते रहे तो मे बी यस गोल आने के चांसेस बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अभी ऑन द हैंड अफनान को सबसे ज्यादा जरूरी है वो गोल उनके तरफ से आए, एटलीस्ट उनके फैंस एंड जितने भी ATKMB के लाइक करता धरता होंगे, जो प्लेयर्स है लाइक सिर्फ अफनानी नहीं, विकी भी इधर पीछे से प्रे कर रहे होंगे कि एटलीस्ट एक गोल आ जाए, एटलीस्ट एक ड्रॉ निकल जाए। ओह माय गॉड, वो नहीं हुआ, लेकिन शुभम टम बैक टू बैक 2 गोल्स के साथ अपने ट्यून से बजाते हुए एंड लीड बना चुके हैं 2 गोल का। विद दैट आई थिंक ये एक फाइनल नेल हो सकता है ऑन द कॉफिन, क्योंकि पिछला गेम कोऑप मैच में निकाला गया था केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से 2-0 से, इधर एक बार फिर से 2-0 स्कोर किया गया है। दैट मींस अगर ड्रॉ भी करना है अफनान को, आखिरी कुछ मिनट में 3 गोल स्कोर करने होंगे। एंड अभी तक जिस तरीके से शुभम बैक टू बैक अटैक किया है, उनका जो डिफेंस जिस तरीके से उन्होंने एक जगह पे समेट के रखे हैं, आई डोंट सी कि कोई भी गोल आता हुआ अफनान की तरफ से। एंड अगर आया भी तो 3 बैक टू बैक बहुत टफ लग रहा है। 2 अगर आ भी गया, अगर ये ड्रॉ पे भी खत्म हुआ, फिर भी 3 पॉइंट जो है वो केरला ब्लास्टर्स एफसी लेके जाएंगे। सो केरला वासियों खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। शुभम हालांकि वो तो रोज ही करते हैं परफॉर्म, कंटिन्यूअसली वो अपने क्लब के लिए हर बार करे थे, हर बार कहने की जब जब जरूरत हुआ शुभम उन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। लेकिन ये गोल के साथ उन्होंने ये बता दिया है कि यस वो अभी भी रेस पे है, और ATKMB आप थोड़ा हल्के में ले लिया हमको। Yeah, I mean, this is where Kerala Blasters FC, right? Still keep on roaring. The players, the fans, still in the game. But Afnan, he's got to do something. You can see the pressure taking over. I think it all went down the line, spiraling down the moment he conceded that penalty. Ever since he's been off, but could be another sucker punch for Afnan with Eusebio. Shubham goes for a heel-to-heel. Almost felt like he lost control of the ball. Now just playing around with Afnan over there. And you could see that frustration taking over as he gives away a corner. And now with R9 with Bellingham. And I think Shubham will start using that into his advantage. Would start pressing Afnan where it hurts him right now.
right in the head, has gotten past him. Afnan being very desperate, making those mistakes which he ideally does not and should not at this point, because he knows how crucial this game is, and because Afnan not just has to score 2, TT he has to score 3 for ATKMB to get a good result out of this. एंड वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी तक एक गोल भी नहीं है और 3 करना इतने कम टाइम पे। आई डोंट सी कि वो होता हुआ दिखेगा, बट उसी भी ऑन द अदर हैंड अभी देखिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही हो सकता है कि बॉल अपने पास रखे। शुभम वही करते हुए दिख रहे हैं और वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। Oh. Just lost the ball there in a very nice fashion. But I think, TT, these are those chances that Shubham at this point can afford to take, and he's been doing that a lot. Going for those driven lob through passes, those lob throughs, and he's been creating so much of that space. Afnan getting exposed from the left and right backs, and that is something that's kind of coming down to haunt him at this point. And ATKMB, this match so important for their survival, and they are looking out of competition, and there you could see those sliding tackles showing how desperate now Afnan is, and he doesn't care at this point, and could have been a yellow card. Yes, there you go, a yellow at this point. Afnan won't even care if it's a red. He just wants his misery to end, and Shubham, I think, felt like some issue with his player pass there. You see that on his face. अफनान वो अपने पास बॉल रख रहे हैं शायद। नहीं, उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। उनको पता है कि शायद नहीं होगा, और शुभम के चेहरे पे वो खुशी, वो राहत कहीं ना कहीं दिखता हुआ, सांस में सांस आया है। और आखिरी कुछ मोमेंट पे केरला ब्लास्टर्स एफसी उनके लिए बहुत डार्क नाइट से, बट फाइनली खुशियों का सनशाइन दिखना शुरू हुआ है। मे बी वो हो सकता है कि बहुत छोटा चांस हो, बट वो अभी भी है केरला ब्लास्टर्स के पास। एंड इस गेम के 3 पॉइंट्स के साथ वो भी कहीं ना कहीं जंप करते हुए दिखेंगे, एंड जंप करके इधर बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे ATKMB के, क्योंकि दोनों का ही ये 9 गेम था, और इस जीत के साथ अभी दोनों का ही 9 पॉइंट्स भी हो चुके हैं। Yeah. And I am kind of curious what the goal difference will be, because we did not see a lot coming from ATKMB for sure. So I'm pretty sure that Kerala Blasters FC will go past them at this point, right? And ATK Mohun Bagan, for them, it has either been those wins or those losses, right? They've already lost 6 games over here and have managed to win 3. Where Kerala Blasters FC have won 2 and have drawn 3 and have lost 4. So at this point, I think for ATKMB and for Kerala Blasters FC, both of them have to do anything and everything to win their final game. For ATKMB, the last hurdle will be against Hyderabad FC, who are also fighting for a spot in the playoffs. And for Kerala Blasters FC, it will be against Chennai FC, who have taken a huge loss. So they will have to do whatever it takes to win next time, and that pretty much would kind of be one of the major deciders. Where if it comes down to sharing points, if they share points, then Chennai FC will move ahead. If Kerala Blaster FC wins, then they might move ahead. And if Chennai FC wins, then that's already there that they're going ahead, because they have still sitting at 11 points after playing those 9 games, right? It very much matters to what happens up next. But folks, let's take a look at the scorecard, as there you go. So the first game ended in a draw, nothing separating them. But in the second game is where Kerala Blasters FC, the Yellow Army, steps up and bests the players of ATKMB. Those 2 goal advantage
and that sort of carried forward with Shubham winning his matchup 2-0. And this is expected out from the Viper, right? He tends to score. He is a very calm player. He's one of the top scorers in the eISL, I must say. At least anywhere running around in top 3, if I'm not wrong. But let's take a look at the MVP, and there's going to be no doubt on who it is going to be, right? It has to be Shubham Tam. Those 2 goals scored, and TT, Yeah. you could see him celebrating. You could see that the happiness of winning and how much it mattered to Kerala Blasters FC and their fans, just reassuring them that yes, they are getting things right, slowly in order. I mean, देर आए but दुरुस्त आए. जब तक आ रहे हैं, तब तक जब तक चल रहा है, जब तक जीत रहा है, everything is fine. But now in that next matchup, this is where they have to play the best FIFA of their lives, and not just for KBFC. Same goes for Chennai FC, because it would be a huge upset if you could see the defending champions of the previous eISL and now not even making it to the playoffs. Now that will be unacceptable. अभी इस गेम के बाद एक सिचुएशन तो बन चुका है. इसके बाद दोनों ही क्लब्स के जो नेक्स्ट गेम्स हैं उनमें ही वो 4 क्लब्स इन्वॉल्व होंगे उनमें, और वो चारों के चारों क्लब्स अभी रेस पे है. जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो रह जाएगा. क्योंकि वो चाहे चेन्नई एफसी हो, अगर हार गए चेन्नई एफसी, देन कोई डाउट ही नहीं है कि केरला ब्लास्टर्स एफसी इधर से क्वालिफाई कर जाएंगे. ऑन द अदर हैंड जो मैच है एटीके मोहन बगान का, वो मैच है हैदराबाद एफसी के साथ. अगर एटीके मोहन बगान जीत जाते हैं, देन हैदराबाद एफसी क्वालिफाई नहीं करेंगे. सो पूरा 2 शफल हो सकता है आखिरी दिन पे, आखिरी गेम पे. तो इसी के साथ कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि रात के नींद उड़ने वाली है चारों क्लब्स की. I mean, get back to praying, right? That's all they can do. Pray and practice. And yes, that will be the mantra to maybe qualify for the playoffs. But that being said, folks, we are done with this picture. What we will do right now is head for a short little break, because coming right after this is a match that you will remember for a long, long time, because in that, the Titans will collide.